दोस्तों मेरे साथ कमल जी हैं, कमल सिंह जी, जिनको आपने देखा। बड़ा अच्छा गीत संगीत तो करते ही हैं और ये हमारे रेडियो जॉकी भी रह चुके हैं। कमल जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है रेडियो मनपसंद में। ये गिरमिट दिवस जो मनाया जा रहा है HTCC में, इस बारे में कुछ बताइए। मनीष जी, सर्वप्रथम तो आपको और सभी सुनने वालों को बारंबार धन्यवाद और प्रणाम हो। और देखिए, हमारा जो आज का यहाँ गिरमिट दिवस है, जो आज हम कमेमोरेट कर रहे हैं 145, वो है कि हमारे जो पूर्वज भारत से फिजी गए थे, इंडेंजर्ड लेबरर्स जो थे, वहाँ पर जाकर काम किए खेतों में, गन्ने के खेतों में, रुई के खेतों में, और उनका जो कठिन परिश्रम था उनके बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। उनके जो जीवन थी तो बहुत ही कठिनाई से गुजरी है। 5 साल की उनकी एग्रीमेंट थी, वो एग्रीमेंट कह नहीं पाए, फिर वो एग्रीमेंट शब्द गिरमिट में ट्रांसलेट हो गया, तो वो आज संसार भर में गिरमिट के रूप से जाने जाती है। और उस गिरमिट के समय में उनको बहुत दुख झेलना पड़ा, क्योंकि वे अपने परिवारों से बहुत दूर थे और अपने इष्ट मित्रों से और अपने देश से बहुत ही दूर थे। पर वहाँ पर एक अपना देश बनाया और सब मिलकर एक ही भाषा बोले, और हमारे फिजी का एक अपना सुनहरा भाषा है और जिसे सुनने में ज़रा सभी लोग को ज़रा अचंभा होता है, पर जो इतने ढेर प्रांतों से आए थे वो सब मिलकर एक ही भाषा बनाए और अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपना ट्रेडिशन कल्चर को नहीं भूले। बिल्कुल। 5 साल में उनको केवल हफ्ते की एक ही संडे को समय मिलता था, पर उसमें भी वो बैठकर अपना रामायण पाठ, भजन इत्यादि करते थे, अपने दुख भरी कहानी एक दूसरे से शेयर करते थे। तो और आज देखो, वो कहानी आज हम रामायण लेकर चलते हैं जो वो अपने साथ में लेकर आए थे, और वो ज्ञान हमको दिए हैं, और हम बस उनके बहुत ही कृतज्ञ थे। और अगर शायद वो नहीं होते तो आज हम पता नहीं कहाँ ठहरते। बिल्कुल, आप लोगों ने भाषा जिंदा रखी, सभ्यता जिंदा रखी, संस्कृति जिंदा रखी। इसके लिए आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैं, ग्रैंडफादर्स हैं, पेरेंट्स हैं जो उनका, तो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर कौन माइग्रेट किया? मेरे आजी और आज आए थे, ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर। अच्छा। तो मेरी आजी उस समय 5 साल की थी जब आई थी, तो जैसे जैसे समय बीता मेरे को भी उनके साथ में समय मिला। अच्छा। मैं जब छोटा था पाठशाला जाया करता था, तो क्योंकि वो 110 वर्ष तक जिंदगी रही। अच्छा। जिस साल पहला बोट आया था, जिस समय गिरमिट स्टार्ट हुआ था, तो उसी समय उनका जन्म हुआ था। अच्छा। और जब वो आई थी यहाँ पर तो 5 वर्ष की थी। अरे वाह। हाँ, तो वो याद रखती हैं कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अत्याचार किए या कैसे? काफ़ी कुछ उन्होंने हमसे कहा है, और आज हम कथा में या कार्यक्रम में आज हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि आप रुकिए और आगे। बिल्कुल, हम देखेंगे और लोग भी देखें और गिरमिट दिवस के बारे में जानें, क्योंकि आप लोग भारतीयता, या कहते हैं भारतीय सभ्यता को फिजी तक ले गए और फिजी से फिर ऑस्ट्रेलिया लेकर आए। बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ फिजी ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन बना हुआ है? जी हाँ, वो भी है, और अभी हमारा गिरमिट फाउंडेशन भी है। अच्छा। और साथ ही में केवल यहाँ पर नहीं है, न्यूजीलैंड में भी है, अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ जहाँ पर हमारे फिजी भाई बहन पहुँचे। हाँ, पहुँचे हैं, वहाँ ये अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कमल जी, आप लोग लगे रहिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि थैंक यू मनीष जी। 14 मई हर साल आती है और हम उनको कमेमोरेट करते हैं। चलिए, तो आज हम लगे इसी के साथ रहिए रामायण का तड़का लगा के। जी हाँ, नमस्कार।
सबके चरणों में हम नमन करते हुए आज की कथा को हम श्री गणेश करें। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है कि आज हम इस महत्वपूर्ण दिवस को इस मंदिर भवन में पुनः एक बार फिर मनाने को उद्यत हुए हैं। परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी की अनुपम कृपा जिन पर बनी रहती है, आदरणीय बंधुगण, माताओं, बहनों और बच्चों, की उनकी जीवन सरल और उनकी जो व्यक्तित्व है उसमें बहुत बदलाव आ जाती है। और इसी को हम अनुभव करते हुए आज यहाँ बैठे हैं। जो हमारे पूर्वज आए थे और अनेकों अनेक प्रांत से आए थे, अनेकों अनेक भाषा बोलने वाले थे, लेकिन उन्होंने जब एक गुट होकर के रामायण महारानी की वंदना की, रामायण महारानी की उपासना की, तब उनमें दृढ़ शक्ति प्राप्त हुआ और दृढ़ शक्ति से उन्होंने जो काबिलियत हासिल की, गिरमिट की जो उनकी 5 वर्ष की जो उनकी श्रेणी थी, उनको हरी भांति उन्होंने निभा करके और उनमें जागृति हुई कि अपने बच्चों को उन्होंने एक बार उनको महसूस हुई कि वो जो आए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं किए थे, केवल अपनी भाषा ही जानते थे, लेकिन हिंदी को जो नहीं जानते थे हिंदी को सीखें, रामायण को पढ़ें, गन्ना के खेतों में रामायण को बाँचें और रामायण महारानी की शक्ति उन पर मिली और उन्होंने पाठशालाओं का निर्माण किया। पाठशालाओं का निर्माण करते हुए अपने बच्चों को दृढ़ शिक्षा प्रदान की। उसी हेतु आज हम सब यहाँ बैठे हैं और आनंद विभोर होकर के इस कथा को पुनः हम बाँच रहे हैं। चले, आज की कथा हमने भक्ति योग के श्रेणी से लिए हैं और भक्ति में जब प्राणी मात्र आते हैं उनके दैनिक जीवन में ऐसे परिवर्तन आती हैं कि वे सब कुछ भूल करके केवल परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जब ये गति हो जाती है तब हम मन कर्म वचन से केवल राम नाम का ही जाप करते हैं और राम ही वही शक्ति है जो कि इस संसार में सब कुछ प्रदान कर सकती है। ये दृढ़ विश्वास को लेकर के हम आज की कथा को श्री गणेश करेंगे। जिसको बोलते हैं, उन्होंने उस राम नाम के सेतु के द्वारा उस गौशाला को पार किया। वो तो अत्यंत निश्चित ही है, क्योंकि कुछ भी नहीं जानते होंगे, लेकिन राम नाम जिसने ले लिया वो भगवान वैकुंठ की प्राप्ति उनको अवश्य होनी थी। तो गिरमिट दिवस के शुभ अवसर पर आप सबका, जितने भी हमारे भाई बंधु भगिनी यहाँ पे बैठे हैं, सबका स्वागत है आज के इस दिवस पर।
ऐसी गीत से शुरू करने जा रहे हैं जो आजकल सुनने में बहुत कम मिलता है, और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं हमारे जो पूर्वज भारत से आए थे। कठिन परिश्रम के बावजूद भी उनमें ज़रा सा समय था कि अपना जो ये कल्चर है इसे भी आगे बढ़ा रहे थे। और आज आंटी जी हमारे सामने हैं, आंटी कोकिला जी, और वो आज हमको एक सोहर सुनाएंगे, सॉरी विदेशिया सुनाएंगे। वैसे बात तो थी सोहर Yeah.
थैंक यू बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें याद है हमारी आजी कहा करती थी कलकतिया, कलकत्ता से आए थे तो कहते थे कलकतिया, तो आज ये शब्द भी यहाँ पर सुनने को मिला। हम आज SDCC फ्लोरी टेम्पल की तरफ से हमारी वाइस प्रेसिडेंट वीना बाइतो यहाँ पर है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि SDCC की तरफ से 2 शब्द। Thank you, Kamalji. Ram Ram, good evening, Namaskar. My name is Veena Michael, and on behalf of HDCC, I would like to welcome you all to the 143rd Girmit Day commemoration. Now, I will give you a little bit of an insight into how this day and the importance of this day was formed. And I basically didn't know much about it, but it really educated me and gave me much more respect towards you all, and you know, it's just enlightening with how we have gone through this and come such high position, high levels, and I appreciate and commend you all for this. So firstly, what is Girmit? Girmit, the word Girmit represents an Indian pronunciation of the English word agreement. This agreement was between the British government and the Indian labourers. And this agreement basically specified all the conditions of the length of stay for the people who were taken from India to Fiji. And Indians from all over India were initially brought to Fiji as labourers to work on sugarcane plantations. Between 1879 and 1916, a total of 60,965 Indians arrived in Fiji. A total of 42 ships made 87 voyages carrying Indian indentured labourers to Fiji. The first of these ships docked in Fiji on 14th May 1879. That's why today is 14th May. Today is a big important day, and that's the first ship which docked at the Fiji dock. And this was meant to be a short journey. They were lured, that all the people were told it's going to be a very short journey, but it was a long and arduous journey across continents. And on board the ship were men and women from India who were promised a better life. And many were recruited from so far inland in India that they'd never seen an ocean. Most were poor farmers who left drought and hardship, hoping to return home to their villages in India after a while. The Indian workers under the contract, they came to known as Girmitiya. It's again a Hindi word for the word agreement. This was basically like a 5-year bond. It's a 5-year agreement where it was extendable, but on finishing 5 years, they were permitted to return back to India, but at their own expense. However, if they stayed for another 5 years, that would be funded by the British colonial government. Some people returned at the end of their indenture, but most of the people stayed back because they could neither afford to go back home
or they had lost the connection with their families back in back in India. Life in the plantation was a bit cruel, mistreatment was rife, and living conditions were harsh. However, everybody used to stay together and sing songs called Videsia, which we just heard just now. It was so beautiful to hear. And that's how they kept themselves entertained. And they used to have a lot of Ramayana path and things like that. So to keep the culture going, to keep the tradition going, the heritage going. So they were keeping themselves entertained in spite of the harshness of life as workers on the plantation. This year also marks the apart from 143rd anniversary of Grimit in Fiji, this year also marks 102nd anniversary of the termination of the indenture system, which took place on January 1, 1920. It effectively gave freedom to all indenture workers, that is Girmitias, as they call themselves, from their bondage. Girmit Day is not only a time to acknowledge the tremendous hardships endured by Girmitias, but also how far we have come, and to celebrate their achievements and contributions to our beloved nation and community here at Flory, Australia. The Girmitia and their descendants worked very hard to revive their language, maintain their culture and traditions, the Indian values, despite of all the difficulties they went through. As the years passing by, we are able to tap into their rich traditional values. We are proud to be associated with their hard-working descendants. Many have helped physically and financially to shape this HTCC in Flory Temple. Also, they've shown great leadership by several past presidents who contributed also to the many aspects of HTCC. HTCC will always look forward to supporting and working with you all. Wish you all the best, and this is a very important day, and let's celebrate. Thank you. Thank you, Viraji. Tonight actually we have got a quite informal program, so we'll be coming around. I've got a portable mic here, so we'll be asking some questions. So we want everyone to, or whoever we come to give us some feedback, some response, or what you feel about Girmit, or whether you know about something that your ancestors brought, or whether you have met them during your time. So be prepared for this. I invite Diman has got questions, so he'll be firing questions from me here. I guess, Uncle, what, in your mind, what do you think is the legacy of Girmitians? And for us, the future generation, how should we remember them? And what is the best way to honor that legacy? Okay, yeah, that's a good question. That's a good question. But first of all, you got to remember, Girmitia is just not our descendants from Fiji. Girmitia is Indian agreement that the British Raj had with Indians going from India to several of their colonies, Mauritius, Suriname, places like that, and Fiji. Fiji was one of the very late. So the legacy is, of course, that we as descendants of Girmit people, our ancestors, so Fiji, in the case of Fiji, our legacy is, of course, we probably would not be here had our forefathers not toiled so hard under that system. So no matter how hard the indenture system was in terms of actual physical labor and all those things that our people did back in Fiji in the sugarcane plantations, they endured, and they've given us the future. Okay, and then that future keeps going to our children and grandchildren and so on. So that's very important. We can't forget that. You know, there are some bad stories and there are a lot of good stories, but I think the legacy is very positive,
said, I just wanted to say the Vice President did a fantastic job in giving us so much good history. And I've also been reading and researching, and 100% right. So, but one question came to my mind, all these Videsya songs and everything that people are singing, most of them are saying, I left from Calcutta. Everybody is mentioning Calcutta. So does everybody know what Calcutta is? Or where Calcutta, or what is it called today? So Calcutta is a port in India, which is today called Kolkata. So obviously the ships had to go from some port. So most of the ships, I think all the ships that sailed from India to take indentured laborers to Fiji went from the port of Calcutta, now Kolkata. But the funny thing is, most of the indentured laborers went from very far inland, landlocked places. They had never seen a river. Forget the sea, forget the ocean. Can you imagine people from Uttar Pradesh, Rajasthan, and all these? If you look in the map, you'll see there are thousands of miles, kilometers from any ocean, any coast. So these people, there were these colonial agents, the British agents, who would sign them up. People who had suffered some sort of a calamity, they were very poor, they had lost their crops in fires or drought or whatever. So a lot of people were quite vulnerable. So these agents go and, sail-storm them and sign them up and say, look, hang on, we'll go on the train to Calcutta, and from there, there's a half an hour ride or an hour's ride by ship across the ocean, and you'll be there for 6 months, and then you come back with a lot of money. So the stories are that a lot of indentured laborers left the home country under those false pretexts, false promises. And they called it Kalapani, means unknown waters. For them, the ocean, which they had never seen, they referred to it as Kalapani. For them, just unknown, So once on the ocean, many just, perished. There's a lot of the stories about some just jumped overboard when they realized, they'll never see, they come home. So a lot of these things that we should know, the children of the Girmitians should know this, what our forefathers and mothers endured on way. And but whatever it is, what I was coming back to was the significance of Calcutta. That's where the ships went from. And in some past reading, I found out that there was a ship that came to Australia as well, from Calcutta, packed with Indians. And it was on its way to Queensland, and I think a day or so before making sure the ship sank, and nobody survived. And I think it's documented. So that one of the middle ships, they were going to Queensland. Yeah, without prolonging, I think I've answered more than what you answered. But that was bothering me as well. Where is the Calcutta come from? Okay? That good? Okay. Thank you. आपके लिए in the same vein, अब जैसे हम लोग जो है फीजी से हमारा तो direct first connection था, पर हमारे बाद में जितने बच्चे हैं उनका they don't have the direct connection. कभी कभार जाना और even language से भी वो अब एक distance हो गया है. So how do you see, in your opinion, how do we try and retain that, or is there more progress to be made in that? All the difficulties that they had, they persevered in terms of making sure they kept the culture. So despite all the difficulties they had, and I guess in the little time they had in terms of to be able to prepare and come on this journey, they brought Ramayana with them, which we mentioned earlier. We still recite in the Bhagavad Gita, and we see, like, from those humble beginnings, we have
kept, we've been very practical in terms of understanding that we have a culture which is so rich, which is so diverse, and we try and practice it as much as possible. And what we have tried to do is, we have developed this concept of mandlis, which is basically a group of people getting together and discussing and sharing knowledge. And that is such an important thing to take forward as well. I think if our forefathers have been able to maintain culture in such difficult circumstances, we should also be able to do that for our children. And we all should be able to take some time and feel proud of our culture and our tradition. And I think with the technology now, we have opportunities in terms of being able to impart that knowledge in so many different ways. There is this social media through which we can share knowledge. And I think if we take individual responsibility for what we know and we share it with our children, we can also form groups. Like, we find when kids go to school, they learn different languages. I don't see any reason why our kids won't be able to learn Hindi and be able to understand some of the richness in our culture. Some of the people, when they talk about contemporary management, they go to things like Bhagavad Gita and take the knowledge from there and share. Meditation, yoga, all of these things are actually coming from our rich culture. And I think it's responsibility on all of us to recognize that in the first instance, to share that with our, I think, when we were young, our elders used to sit with us and share knowledge with us. It became a brainstorming exercise. It also became sharing of knowledge and through stories. So we learned the richness of our culture through that medium. I think when we sit with our kids now, we can share some of that knowledge as well and take them on their journey. So I think if we also take that personal responsibility and start doing that, we all will be able to find that we are able to go on the journey that our forefathers did about 100 years ago. Thank you. We have got so many people here, so I'll be coming with a few other questions to other people here. But on this significant day, there are a couple of people who are celebrating this day in another format or for something else. We would like to acknowledge Dr. Subhash, who is here. It's his birthday, so happy birthday to you as well. Also, I have this old, I shouldn't say old, but looking pretty old couple sitting here. I'm very happy, as everyone knows them too. Mummy and Daddy. It's their wedding anniversary as well, 56th wedding anniversary today. I've got one quick question. Is there anyone who has had a very direct connection with their ancestors? Very soon we'll be hearing something from Hai Man as well, his presentation, but before that, I think Mummy is here. Mummy, tell us something about Nana. Actually, on the way here, she was telling us that Nana came from India, and he was actually lured into coming here, as most of them. So, poor thing, he had to leave his wife back, right? And Mum also told us about certain things that he taught, the way he used to eat, and all those. So these are very fond memories, I think, very treasured memories that we all can always keep in ourselves. Bina ji se bolta tha कि we are so proud कि हम लोग के parents, forefathers आए से और Fiji से different branch से आए से, पर still Fiji में आए कि उन्होंने अपने एक नवा language बनाई से. So अभी हम जी बोलता है बिना जी ही Fiji हिंदी, ठीक है? So Fiji हिंदी इतना important है हम लोग के लिए क्योंकि daily basis पे हम लोग बात करता है, पर हम लोग के लड़कन यहाँ पर भाषा नहीं समझ पाए हैं over time because और अगर संज्ञा अगर शुद्ध हिंदी में उनको सुना हुआ है तो थोड़ा डिफिकल्ट भी पड़ेगा, पर इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम अपने लड़कन के संगे बैठ के थोड़ा फिजी हिंदी में बात करते रही,
पीजी रेडियो भी चलते रहे। आजकल तो पीजी रेडियो काफ़ी डिफरेंट लेवल पे पहुँच के उसको टाइम सुनने लायक भी नहीं है चीज़ है। पर अगर के संगे उनके थोड़ा एनकरेज करते रहे पीजी हिंदी के, प्लस उसके संगे साथ साथ में पीजी में भी बुक्स निकल गए जिसमें डायरेक्ट ट्रांसलेशन डायरेक्ट राइटिंग्स है पीजी हिंदी में। तो वह हम मुस्तबिक पे डिस्कस करा करते उनके से बात करते रहे, तो उनकी इजी पड़ी सुने अंडरस्टैंड करते तो सुनो सुन ही ले जाए, ठीक है। सो वही सोचता कि अगर हम अपने संगे पीजी हिंदी में बात करते हो, जैसे अभी हम आपसे बात करता है पर लगन भी इजी पड़ी सुनेंगे, अंडरस्टैंड करते हैं। थैंक यू। तो सिंगिंग में यानी देहाती संगीत या तो देसी संगीत में, इसमें जो मैसेज है ज़्यादा वर्डिंग्स या लिरिक्स से है। तो विदेशी गायन शैली बिहार प्रांत से है, ज़्यादातर भोजपुरी भाषा में होती है। ये पहले भी काफ़ी प्रचलित था, फिर भिखारी ठाकुर करके एक बहुत ही फेमस राइटर हुए जिन्होंने उसमें एक प्ले लिखा विदेशिया करके, जिसमें विदेशिया इज एक्चुअली द नायिका, it's the lady that is complaining, and it is विदेशिया is usually about वो जो विदेशिया लेडी complaining about कि उनके जो शोहर है शादी के इमीडिएटली बाद या तो जो भी उनको विदेश जाना पड़ा। ये बिहार में बहुत पहले से चलता आ रहा है, जो शादियों में वो बताएंगे कि कलकत्ता में जाना और कलकत्ता में जाकर काम करके आना, इसलिए वो परदेश गए विदेशिया, तो वो कंप्लेन है। क्योंकि हमारे लोग वहीं से ज़्यादा आए थे, तो इस फोक को लिया और इसके लिरिक्स वगैरह चेंज करके थोड़ा सा वही भावना दिखाने की प्रयत्न की। तो ये इसको एक फीजी में विकास, फीजी हिंदी में लिखा हुआ स्वरूप और विकास एक किताब है 1990 में लिखा था, तो उसमें से ये विदेशिया है। ये खासकर गिरमिटिया लोगों की जो मन उन पर क्या बीती है और उनकी भावनाओं को दिखाने की प्रयत्न की गई है इसमें।